Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the topic acylglycerols. So let's move to the whiteboard. So acylglycerols प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. सो acylglycerols को हमने कहा था these are the type of lipids that contain fatty acids and glycerol. Glycerol, that is the simplest alcohol. इसका कल हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, क्लियर कट. The most widespread acylglycerol is, dear students, it is important regarding MCQs. The most widespread acylglycerol is triacylglycerol, or also called as triglyceride or neutral fat or lipid. Clear? So all these are the synonyms of triacylglycerol. तो triacylglycerol सबसे कॉमनली पाई जाने वाली acylglycerol है और इसी का दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड भी है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएट इस तरह से करते हैं TG. और इसके हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम ब्लड केमिस्ट्री कराते हैं और ब्लड केमिस्ट्री में जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल और फिर उसमें उसकी मुख्तलिफ इकसाम की लिपिड्स के जो लेवल चेक किए जाते हैं. अगर आपको इत्तफाक हुआ हो देखने का तो उसमें ज़रूर देखिएगा, दोबारा से देखिएगा. उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम LDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज VLDL, या फिर HDL दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. और उसके बाद चौथी चीज़ उसमें होती है TGs विच आर कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स. All these four are the categories of lipids which are assessed in the human blood. इसमें से जो HDL होती है that is a good cholesterol और बाकी LDL and VLDL ये दोनों कोलेस्ट्रॉल्स बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाती हैं और जिसकी वजह से दिल और शरियानों की जो ब्लड वेसल्स की जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से होती हैं. क्लियर? तो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हवाले से हमने कल बात कर ली थी कि बेसिकली इट इज़ बाय द एस्टर्स, ठीक है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल. और उसमें हमने बात की थी कि जो ट्राइग्लिसराइड है ये किससे बनती है, इट इज़ मेड ऑफ 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल और उसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और उसमें से बन जाती है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल. कल उसकी फॉर्मेशन के हवाले से मुकम्मल बात हो गई थी. सो टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन दैट द acylglycerols उसमें जो मेजर चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैटी एसिड्स. The most important structure or compound in triacylglycerol is फैटी एसिड. क्लियर? अब हम फैटी एसिड के हवाले से ही अगली सारी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे. सो फैटी एसिड्स, द फैटी एसिड्स contain
even number of carbon atoms. और वो इवन नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? दैट इज कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 30, C2 to C30, यानी कम से कम जो फैटी एसिड है वो 2 कार्बन से मिलकर बनता है और ज्यादा से ज्यादा 30 कार्बन से मिलकर बनेगा। तो और होंगे किस तरह से ये? इवन नंबर्स में, मींस 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 7, 11 इस तरह की अरेंजमेंट में ये फैटी एसिड्स नहीं होते। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट MCQ। और इसका जो नंबर कार्बन नंबर है C2 to C30, that is also MCQ, in which carbon is bonded to hydrogen and one acidic group। और डियर स्टूडेंट्स वो एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? दैट इज COOH, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड पे आमतौर पर जनरली बता रहा हूं, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, दैट बिकम्स एसिड, और आमतौर पर हम उसको फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, दीज फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन्स। दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन्स। इसमें जो कार्बन की जो स्केलेटन होता है, कार्बन स्केलेटन इस फैटी एसिड का, आमतौर पर वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन की शक्ल में होगा। नाउ इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स are present in the form of straight chains, while in plants the fatty acids are present in the form of branched or ring structures. Clear? Now, dear students, the types of fatty acids. So there are 2 types of fatty acids: saturated fatty acids and unsaturated fatty acids। और इस शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। The saturated fatty acids, they contain only single covalent bonds
while the unsaturated fatty acids, they have double bonds and up to maximum 6 double bonds and minimum 1 double बॉन्ड। क्लियर? तो ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं? दैट इज 6। दे इन मैक्स दे कैन कंटेन ओनली 6 डबल बॉन्ड्स वाइल मिनिमम 1, तो तभी वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर? द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स contain no double bond। क्लियर? तो ये इसका पॉइंट इसके साथ आपने मेंशन करना है। दे हैव ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद नो डबल बॉन्ड। वन मोर पॉइंट, देयर एग्जांपल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। द एग्जांपल इज नंबर 1। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी बुक में मौजूद हैं, वही मैं यहाँ पर उनको डिफ्रेंशिएट करके कोट करने लगा हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो सबसे पहले CH3 COOH। सो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कार्बन है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन। तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड्स में एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा और इसमें कम से कम 2 होंगी। सो ये कम से कम 2 वाली फैटी एसिड्स है। दैट इज एसिटिक एसिड एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह से वन मोर CH3 CH2 CH2 COOH. So that is butyric acid. Clear? So it contains 4 carbons, 1, 2, 3 and 4. Clear? So that is C2 and that is C4. Another example is CH3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Clear? So carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So this is 16 carbon saturated fatty acid। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। So that is known as palmitic acid। That is palmitic acid and it contains C16। 16 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। क्लियर? एंड नाउ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी एक एग्जांपल हमारी बुक में गिवन है, दैट इज ओलिक एसिड। उसको भी मैं यहाँ पर नीचे, बल्कि यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बिल्कुल नीचे। इट्स एग्जाम्पल
CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चूंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें कम से कम एक मिनिमम 1 डबल बॉन्ड देयर शुड बी। क्लियर? और वो डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। यहाँ पर वो डबल बॉन्ड एक ही मौजूद है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि जो ओलिक एसिड है उसमें डबल बॉन्ड कौन कौन सी कार्बन के दरमियान मौजूद है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन नंबर 9 एंड 10. So this is the formula for oleic acid, and it is an unsaturated fatty acid containing 18 carbon atoms. Clear? तो ये आपको होपफुली ये इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। और ये स्ट्रक्चर हमारे बुक में गिवन है, आसान है, आपके सामने मैंने ड्रॉ किए, इसी तरह से आपने भी ड्रॉ करनी है। क्लियर? और यहाँ पर आपने नोट करना है डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है। इट इज एट कार्बन 9 एंड 10। तो जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर CH2 नहीं आएगा। क्लियर? जब ये CH2 बाकी तमाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ से जब 2 हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड और शिफ्ट हो जाता है, इट बिकम्स द डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से। सो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, the fats in animals are solid at room temperature while the fats in plants are liquid at room temperature. The reason behind is the animal fats contain usually the saturated fatty acids, while the plant fats contain unsaturated fatty acids. क्लियर? तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट इज देयर solubility and melting points of saturated
फैटी एसिड्स। इसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में दी गई है, क्योंकि मेल्ट हमेशा सॉलिड करते हैं, तो सॉलिड जो होते हैं आमतौर पर उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर भी इसके हवाले से डिस्कस किया। द इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स the increase in carbon number increases the solubility and the melting point of a saturated फैटी एसिड। इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारी बुक में दी गई है। इट्स एग्जाम्पल दैट इफ यू टॉक अबाउट द solubility, the palmitic acid is more soluble in organic solvents as compared to butyric acid, because कि ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है और पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन है। तो हमने बात की कि कार्बन नंबर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और इसी तरह से द मेल्टिंग पॉइंट of palmitic acid is 63.1 degrees Celsius, while the melting point of butyric acid is -8 degrees Celsius. The reason again, ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन जबकि पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन, इस वजह से ब्यूटारिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पाल्मिटिक एसिड का 63.1 डिग्री सेल्सियस है। और एक और बात डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द स्पेसिफिक gravity of lipids, mean the fatty acids, is less than water. Water की specific gravity dear students, that is 1.0, while lipids they have got specific gravity of 0.8. That is the reason, so that's why the fats float on the surface of water. आपने नोट किया होगा जब भी ऑयल को या जो किसी भी सॉलिड लिपिड को जब हम पानी के ऊपर फेंकते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। द रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 जबकि लिपिड्स की 0.8, मतलब उससे कम है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।